नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन और आज आपकी मुलाकात जिनका नाम आज देश भर में हर एक की जुबान पर है, बैडमिंटन के नए सरताज और हमारे नए चैंपियन। बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप का इतिहास 73 साल पुराना है और अब तक इसके विजेताओं की लिस्ट में सिर्फ 5 देशों के नाम थे। इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया, डेनमार्क और जापान के नाम थे। भारत इस खिताब को जीतने वाला छठा चैंपियन बन गया और इस वक्त हमारे साथ है इसे वर्ल्ड चैंपियनशिप समझे जाने वाले थॉमस कप के नए चैंपियन श्रीकांत। बहुत बहुत स्वागत है। और श्रीकांत, हफ्ते भर पहले यह मिशन इम्पॉसिबल था। टीम ने, मैं बहुत सारी चीज, टीम बॉन्डिंग और विमल से बात कर रहा था, सियादुल्लाह सर से बात कर रहा था, और कब लगना शुरू हुआ कि मेडल ब्रैकेट में आएंगे और फिर जहां पहुंचे हैं वहां। See, first of all, thank you so much. I think maybe yes. I don't think many actually believed that this team can win Thomas Cup title. But from the day one, we were very motivated. All 10 of us, we were very motivated. We believed in each other. Even in our very first team meeting, we told each other that we are going to, give everything that we have, and then we will push each other. We will help each other to, play better badminton. And I think, it's because we really backed each other. I think this victory this victory happened because we really pushed each other. Otherwise, I don't think in such a big team events, it's not really an individual's performance. It's about the team doing well together on court. And I think we did really help each other, and that did really help us. करेक्ट। आपकी टीम बॉन्डिंग के बारे में काफी सारी बातें हैं, मैं बात करूंगा उस पर। आपने कल एक ट्वीट किया, विराट कोहली ने आपको कांग्रेचुलेट किया, तो आपने उनको गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम करके ट्वीट किया। हालांकि जब आप एंट्री लेते थे कोर्ट पे तो आपके लिए चेन्नई सुपर किंग्स का गाना बजता था। Yeah, so these are the small things that we did throughout the tournament. If somebody likes a particular song, so we used to try and play it for them. And if somebody likes to call them something, we try and, call them, with that particular name when they're playing. And every one of my teammates know that I'm a very big fan of Dhoni. So they call me that way. So, yeah. And then they also, because, they think that I'm the captain. And then, they kind of consider this as a team, and then they made that whole thing look like I am kind of playing that captain innings at the end. बिल्कुल, कम से कम फाइनल जो था वो तो कैप्टन, क्योंकि मैं ठीक पहले, फाइनल से पहले प्रणॉय से बातचीत कर रहा था और वो कह रहे थे कि इंजरी है उनको और मैं चाहूंगा कि वहां तक मैच पहुंचे ही नहीं, पहले श्रीकांत उसको फिनिश कर दे। और डबल्स पेयर भी, मतलब इतनी बड़ी पेयर को, डैडीज बोला जाता है उनको, उनके डबल्स पेयर को, उनको हराना। श्रीकांत, अगर पर्सपेक्टिव में देखें, बहुत सारे लोगों को इंडिया में पता नहीं था इससे पहले कि थॉमस कप कितनी बड़ी चीज है। आपको भी आपका ड्यू नहीं मिला। अब रियो में आप बहुत अच्छा खेले, लिंडन से आप हारे, वहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप बहुत क्लोज गए, वहां पे हार गए। आपको अब तक मुझे लगता है कि आपको ड्यू नहीं मिला, और बैडमिंटन को उस तरह से आप इस विक्ट्री को क्रिकेट वर्ल्ड कप की विक्ट्री जैसा देखते हैं। श्रीकांत ने बोला था कि फीफा की तरह देखते हैं इसको, श्रीकांत, प्रणय ने। See, I think this is, there are particular things that are bigger in every sport. Say World Cup for cricket and FIFA for football, and the same way, Thomas Cup for badminton. So it's like the biggest team event that we have in badminton. So so to win this, I think it's a very big achievement for all of us. And and for everyone back home, this win is for the whole nation. Everyone has played their part, and people here, like coaches, support staff, our manager Vimal sir, they all have been very supportive. They've really they really supported us well.
and even from India, we did really get a lot of good wishes, and then all of them, everyone in India, they were really praying for us. So this victory is definitely everyone's, and this is one of the biggest win, that's for sure. बिल्कुल श्रीकांत, ये एक गोल्डन जनरेशन है आप लोगों का। मतलब 100 पहले तो 100 के अंदर ही कितने कम प्लेयर आते थे, 50 के अंदर हमारे 8-10 प्लेयर रहते हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स को हम जानते भी नहीं हैं, मतलब लोग उनका नाम भी नहीं लेते हैं, बहुत क्लोज। और इस टूर्नामेंट में आप मतलब टॉप लेवल के विक्टर एक्सेल्सन हार रहे हैं, यहाँ पे जोनाथन क्रिस्टी हार रहे हैं, जो सब अगर पेपर पे देखें तो आपकी टीम से कहीं बेहतर थे। इन सब को हराने में सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? जो जैसे मैं टीम से भी बात कर रहा था, विमल से, सिद्धार्थुल्लाह से, प्रणय से, आपको लगता है टीम बॉन्डिंग अलग क्रिएट की गई, साथ खेलते थे, जैसे पहले इंडिविजुअल कोर्ट पे अपना अलग अलग प्रैक्टिस होती थी, इसमें टीम बॉन्डिंग होना सबसे बड़ी बात रही टीम के लिए, जीत के लिए? Definitely, I think in such a big events, and that too especially team events, because badminton, as everyone knows, it's an individual sport. You don't play team events very often. So in such a big team event, it's really important for people to step up and then play, and then also for the other 9 players to cheer that player who is playing. And it really creates a kind of an atmosphere where this cheering will really push that player who is playing on court. And if you actually see in some of the matches, we lost our first singles, and then the first doubles pair, really, played well, and then, they really won that match. Everyone can understand how big a pressure they must be going through, after being 1 love down, and then for them to get on court and then, really win that. And then, when I played against Chinese Taipei, we were 2 love down. And then, if I would have lost that match, that I would have been over then and there. But, so I won, and then it went to the next pair. So it's really important for everyone to step up, when it really mattered, and when it really matters. And yesterday in the final, Laksh really stepped up, after us, say, quarter-final and semi-final loss, to have that mental belief, and then to believe in himself that he can do it, and then he got on court, and then he did it for India, to give that first win. It was really important. And then again, Satvik Chirag, they did it extremely well. They beat Indonesians we consider as one of the best doubles players. Correct. They are called daddies. Yeah, so to beat them. And again, Christie has been playing really well. He won last couple of tournaments, and then he played a finals of one tournament. So he's been in great touch. And then, it was kind of a very important match for both the teams. And I am just happy that I was able to play well and win that thing. प्रणय 14 बार के चैंपियन को अपने फाइनल में हराया, जो कि अनबिलीवेबल है। अगर कोई आज से दोबारा बोल दे कि उनको हराना है तो बहुत डिफिकल्ट, श्रीकांत, बहुत डिफिकल्ट है। और अगर क्वार्टर फाइनल देखें, मलेशिया, डेनमार्क, सेमीफाइनल, इन तीनों में स्कोर लाइन बेशक फाइनल का दिख रहा है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट मैच कौन सा रहा है, स्ट्रेटेजिकली भी और गेम वाइज भी? Every match that we played was tough. Malaysia, when after losing to Chinese Taipei, to play Malaysia in quarterfinals, and that to a knockout match, there was a lot of pressure, and it was really important for all of us to step up, and and everyone did well. It went to decider. Pranay really pulled out a very important match, and again in the semi-final against Denmark, we all know how tough Victor, playing against Victor is. I think is currently world number 1 maybe. So Lakshya played really well, even though he lost, he played really well. And again, when I played Antonsen is world number 3 now. So it was a very tough match, but I really, I really had to win, because otherwise the tie would have gone anywhere, either way. So it was very important for me to win and give that point to Team India. And
And yeah, every match is really very important, and I feel can't really compare which team is the best. But every team is best on paper, because if you see, Denmark has world number 1, world number 3, in men's singles. और बैडमिंटन के नए सरताज हमारे साथ हैं इस वक्त। हमारे साथ है श्रीकांत और एचएस प्रणय, दोनों ही सुपर चैंपियन। प्रणय, मैं श्री से काफी देर से बात कर रहा था और श्री जिम करके लौटे हैं और आप पार्टी करके सो के आ रहे हो। कैसे, हाउ वाज द पार्टी? पार्टी सर, कुछ पार्टी तो हुआ ही नहीं, बस डिनर हुआ था और हम सभी लोग टाइम स्पेंड करे साथ में, बट उसके अलावा कुछ हुआ नहीं। बट आई थिंक इट वाज रियली ग्रेट, बिकॉज इधर तो अभी भी पार्टी चल रही है। आपके पीछे है मेरे ख्याल से लक्ष्य, मैंने हल्का सा देखा, लक्ष्य चिराग है। ये सुपर चैंपियन की टीम है। प्रणय, आपने जाने से पहले बोला था कि कुछ भी हो सकता है, हालांकि आपको इंजरी थी, आप फिर भी बोल रहे थे कि आप तक मैच नहीं पहुंचे, श्रीकांत उसको फिनिश कर लें, और श्रीकांत ने आपका जो भार है अपने सर पे ले लिया। एग्जैक्टली, मैंने आज के मैच के पहले पूरे टीम मेंबर्स को बता रहता हूँ कि आज मुझे कोर्ट के अंदर भागना है, मुझे सेलिब्रेट करना है, मुझे उसका चांस दो मुझे मैच खेलने का प्रेशर मत दो आज। एंड मतलब बॉयज तो एग्जैक्टली वही किए। आई थिंक आई एक्चुअली डिडंट एक्सपेक्ट 3-0 because I thought all the matches were 50-50 last night. Correct. And Indonesia always being a strong team, it generally goes until the wire. It generally goes until the last match to decide the tie. So मैंने तो कभी expect ही नहीं किया था 3-0, but I think the way all of them just stepped up yesterday, I think it was just incredible. श्री, वन इमोशनल क्वेश्चन। आई मीन, आपके करियर में आपके भाई का, नंदू का बहुत बड़ा हाथ है, और अभी भी आप थाईलैंड ओपन के लिए रुक रहे हैं, बाकी टीम वापस आ रही है। ये आपने भाई से बातचीत की, मदर से, क्या आपके लिए सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट है ये विक्ट्री? क्योंकि कॉमनवेल्थ गोल्ड भी आप लोगों ने जीता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप आपने तो बिल्कुल नहीं जीता। See, I think this will definitely be one of my biggest wins, that's for sure. But I can't really compare this with, say, Commonwealth Gold or the World Championship Silver or any of my previous Super Series wins. Correct. But I don't really want to compare. I don't really want to give them any rankings. I don't really want to put them in any sort of order. But this will definitely be one of my best wins. See, you have to go to other channels also. Others are waiting. I'll ask just one more question from you. इस बीच में प्रणय, आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपके पीछे जो शरारती चैंपियंस हैं उनको भी अपने कैमरे पे ले आइए एक बारी, साथ देख ले पूरी इंडिया। अभी सुबह सुबह लोग पूरी इंडिया, एनडीटीवी इंडिया के दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं। एक बार केवल शकल दिखा दें, लक्ष्य, चिराग, कौन है पीछे? मुझे उनके बार बार उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। हाँ सर, जब वो लोग आएंगे मैं आपको बिल्कुल करना तो। मैं टीम बॉन्डिंग की बात कर रहा था। प्रणय, इस टीम में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आप लोगों के लिए रही? क्या टीम बॉन्डिंग ही थी जो कि आपको इंडोनेशिया से अलग कर रही थी? डेफिनेटली आई वुड से, आई थिंक टीम बॉन्डिंग लास्ट 2 हफ्ते से, आई वुड से was one of the best experience I ever had with the team as such, because हम लोग काफी सारे टीम इवेंट्स खेल चुके हैं लास्ट 10 साल में, but this kind of a bonding never happened. And I think before we left Hyderabad, this is the first thing which we said, saying that individual performances doesn't matter here. It's how we collectively perform on a particular day. And I think that realization everybody had, saying how a collective performance can get the matches done. And I think that only just happened. I think each and everyone was there. Bilkul. From day one until last night. I think everybody was with the team, and they just wanted everything to do for the team so that the team. Pranay, Shri has to go. Shri has to go. Shri, yes. One last question. What is your next target, Srikanth? Because Rio में आप क्लोज रहे, एक जो मेडल होता है जो सबके मन में, टोक्यो के बाद जो अगला पेरिस ओलंपिक्स है, is that in your mind? Definitely, Olympics is definitely there. I will definitely work towards it, but at the moment there are a lot of tournaments this year. Say I have Commonwealth Games, and then
I have world championships. So for now I'm focusing on these tournaments, but Paris 2024 will always be there. थैंक यू सो मच प्रणय एंड श्रीकांत। और बड़ी पार्टी होनी चाहिए, एज यू सेड कि पार्टी का वीडियो सेलेक्टिवली रखेंगे। अब हम होप करेंगे कि वो आए, और ये आप लोगों की पार्टी बड़ी होनी चाहिए, और ये सिलसिला पेरिस और आगे भी चलते रहना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।